Good evening, everyone. Welcome once again to our options expiry sessions. So today we have gathered here for crude oil MCX crude oil options expiry. So आज MCX crude oil का जो options है उसका expiry है. So as you all know, we try to find momentum trades within these sessions. So ये session में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सा trade find out कर सकते हैं and कोई ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या, ये हम लोग इसमें देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द चार्ट. ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल, MCX क्रूड ऑयल. ये वीकली चार्ट है. सिंस लास्ट मेनी वीक्स वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस चार्ट कि एक ऊपर में जो लेवल बनाया था, जो एक यूएस एंड ईरान के जो टेंशन के बाद जो एक ऊपर स्पाइक मारा था अराउंड 10,500 10,700 काइंड ऑफ लेवल्स, वहां से जो एक फॉल आया था, इट हैज हॉल्टेड नाउ. सो ये एक जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, वहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने एक होल्ड लिया है ऑन द वीकली चार्ट एंड वहां से अभी रिवर्स होना स्टार्ट हुए हैं. एंड रिसेंटली वी हैव द न्यूज केम आउट, जो अभी रिसेंट जो न्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से द फंडामेंटल न्यूज इज सपोर्टिव फॉर द प्राइसेस बिकॉज द टेंशंस आर अगेन राइजिंग बिटवीन द यूएस एंड ईरान. सो उसके वजह से प्राइसेस के लिए ये अभी सपोर्टिव है. तो आज के लिए लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं वो अभी देखते हैं. लेट्स गो टू द इंट्राडे चार्ट. विल गो टू द इंट्राडे चार्ट. सो दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ MCX क्रूड ऑयल. अभी के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम ट्रेड तो नहीं बन रहा है. अभी 7662 का लेवल चल रहा है. एंड अगर हम लोग ये एक पैटर्न देखते हैं, इसमें जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है उसके बीच में चल रहा है. इट्स ट्रेडिंग रेंज बाउंड. अगर हम RSI भी देखते हैं तो RSI में भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं है. इट्स ट्रेडिंग बिटवीन 40-60. इट्स ट्रेडिंग नियर द मिड पॉइंट, तो इसमें कुछ स्ट्रेंथ है नहीं अभी. सो मे बी इट्स वेटिंग फॉर सम न्यूज. मे बी after 6 o'clock there are some data which are going to be released. So उसका भी impact आज आ सकता है. And of course if जैसे मैंने बताया कि यूएस एंड ईरान के जो टेंशन चल रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कुछ न्यूज आउट होता है इन द इवनिंग आफ्टर 6 or 7 आफ्टर द यूएस मार्केट ओपन्स, देन उसका भी इम्पैक्ट हमें इस पे देखने मिल सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग टुवर्ड्स द मोमेंटम ट्रेड, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इसमें जो अभी ऑप्शंस का डेटा है, if you go on the MCX site and if you try to look at the options data, so वहाँ पे जो ऑप्शंस का डेटा है उसमें 7,700 का जो कॉल और पुट है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. 7,700 के कॉल और पुट. सो व्हाट इट इंडिकेट्स कि मार्केट इज लाइकली टू एक्सपायर नियर 7,700. मार्केट ये जो आज का क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑप्शंस एक्सपायरी है, तो आज इवनिंग तक 7,700 के आसपास रहेगा. 7,700 के ऊपर नहीं जाएगा और ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा. ऐसे ये ऑप्शंस डेटा इंडिकेट करता है. बट अगर आपको कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी करनी है, जैसे मैंने बताया कि यूएस एंड ईरान के टेंशन चल रहे हैं, तो उसके चलते कुछ भी न्यूज आउट हो सकता है इन द इवनिंग. सो इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑन द सेलिंग साइड, इफ यू आर एन ऑप्शन राइटर, सो आई वुड सजेस्ट कि on the call side 7,900 का कॉल जो है which is trading at 5 rupees and 7,500 का put जो है which is trading at 8 rupees. So इसका overall जो combined premium है that comes to around 13. So आप वो combined premium trade कर सकते हो. 13 rupees का premium चल रहा है अभी. 7,900 का कॉल which is now at 4 and 7,500 का put which is now at 7 or 8. So around 12 rupees का combined premium है, 11-12 rupees का. तो आप उसको सेल कर सकते हो एंड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 24 रुपीज इन दिस प्रीमियम. एंड इफ मार्केट कहीं पे नहीं जाता है इन दोनों के ऊपर, सो दिस इज ओनली फॉर द ऑप्शन सेलर्स हु आर एग्रेसिव ऑप्शन सेलर्स. सो इसमें आप एकदम एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो. 7,500 का पुट और 7,900 का कॉल, ये 12 रुपए का प्रीमियम है. 24 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. एंड moving on to the momentum trade के लिए we will have to wait. As you all know, we always wait for the confirmation. अभी तक कोई भी साइड में confirmation नहीं है. But speaking of the levels, 7,700 के ऊपर एक momentum buy trade बनेगा. एंड जब तक ये 7,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मोमेंटम शॉर्ट ट्रेंड नहीं बनने के चांसेस है. सो वी विल वेट फॉर सम टाइम. एक 15 मिनट्स का कैंडल विल ऑब्जर्व एंड देन वी विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड. बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑप्शन बाइंग ट्रेड.
जो मोमेंटम हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग ट्रेड में अभी तक दिख नहीं रहा है. सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. 7655 चल रहा है अभी. एंड जैसे मैंने बताया कि द मार्केट इज प्रोबेबली वेटिंग फॉर न्यूज और सम डेटा विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइस. बट वो कौन से साइड इम्पैक्ट करेगा दैट वी डोंट नो. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल द लेवल्स कि 7700 के ऊपर जाता है तो वी माइट सी अ गुड मूव टुवर्ड्स 7800 7850. एंड अगर 7600 के नीचे आता है एंड दिस लेवल इज आल्सो ब्रोकन 7580, then we might see a drop of more than 100 points. जो ये गैप है तो ये काइंड ऑफ फिल कर सकता है. 7420 का लेवल है तो वहां तक के लेवल्स आने के चांसेस है. प्रोवाइडेड इट हैज टू ब्रेक ईदर ऑफ दिस लेवल्स, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है. टिल देन यू कैन गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग इफ यू आर अ very aggressive option seller. Then again you can go for the 7800 call also, which is trading at 15. ऊपर के साइड में 7800 का कॉल है which is trading at 15. एंड 7600 का जो पुट है आई वुड से 7600 वुड नॉट बी गुड, 7500 वुड बी गुड. सो 7800 का कॉल एंड 7500 का पुट ये आप सेल कर सकते हो, जिसका कमेंट पे 21 आ रहा है. एंड उसके लिए आप 42 का स्टॉप लॉस रख सकते हो. सो दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वी हैव सजेस्टेड, एक 7800 का कॉल, एक 7600 का कॉल, और नीचे के साइड में पुट जो है वो 7500 का ही सेल करना है. तो ये आप दोनों स्ट्रेटेजी कर सकते हो, विच इज दिस स्ट्रेटेजी नोन एज शॉर्ट ट्रायंगल. सो अगर क्रूड कोई भी साइड में नहीं जा रहा है एंड इफ इट्स एक्सपायरिंग नियर टू द सेम लेवल, तो ये जो प्रीमियम है दैट इज लाइकली टू गो टू जीरो. सो यू विल बी मेकिंग a profit of 22 points on the 7800 and 7500 स्ट्राइक्स. और अगर आप 7900 और 7500 करते हो तो उसमें आपको 12 से 13 रुपए का पॉइंट्स डीके होते हुए दिख सकते हैं. वो आप 12 to 13 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस डबल ऑफ द प्रीमियम वॉट एवर यू आर सेलिंग. सो एज वी स्पीक थोड़ा बहुत एक मोमेंटम आ रहा है, 7672 चल रहा है. WTI is also sustaining above the 80 level. So 80 का जो लेवल इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. If within the session we find anyhow कि क्रूड 7700 के ऊपर निकल रहा है, then of course we will look to buy the 7700 call which is currently trading at 69. तो जब तक 7700 के ऊपर नहीं निकल रहा है प्राइस, तब तक we will be waiting. We will wait for the confirmation, then only we will enter into the 7700 call. And by any means if crude goes down below 7600, 7600 के नीचे अगर जाता है, then we will go for the 7600 put which is currently trading at 24. So कौन से साइड हमें ट्रेड मिलेगा we don't know yet. We will wait for some time and we will try to catch the momentum. But as of now there is option selling trade that you can go with 7800 call plus 7500 put and 7900 call plus 7500 put. So as per your risk appetite, as per your margin, only you can, I would advise you to like go into the positions, not to risk more than I would say 2% or 3% of your capital on a single trade. So that would be my advice कि कोई भी ट्रेड पे आप ज़्यादा कैपिटल रिस्क मत करना on your capital. तो अगर 7800 का कॉल है विच इज ट्रेडिंग एट 14 नाउ एंड 7500 का पुट है विच इज ट्रेडिंग एट 7 नाउ, तो 13 and 7 विच इज एट 20. सो ये 20 रुपए का पुट कॉल और पुट आप सेल कर रहे हो. सो इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, 40 और 41 का. तो उसमें अकॉर्डिंग टू द लॉट साइज योर like risk per trade on a single lot would be at around 2100. So according to that only you have to go for those lots. So कितने लॉट सेल करने अपने रिस्क एपेटाइट से, so वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा according to your capital. I would not recommend anyone to go all in on any trade. So as of now 7663 चल रहा है, अभी तक प्राइजेस इतना मूव नहीं कर रहे हैं, but still we will wait for some time. We are not going to take any trade on the options buying front because अभी तक कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है. एज आई सेड कि RSI भी कुछ साइंस नहीं दिखा रहा है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है या मोमेंटम वीकन हो रहा है. इट्स वेरी रेंज बाउंड टुडे. सो आई एम थिंकिंग इट्स वेटिंग फॉर अ न्यूज either from the data side or either from
the tensions that are going on between US and Iran. तो कोई भी एक न्यूज़ रहेगा which would be the trigger in the evening, probably after 6 or 7. But till then, what to trade? Till then, you can go with the option selling strategies, the short triangles which I suggested. And apart from crude oil, there's some action within the base metals counter. Last time also we did, last week also we did the options expiry session for NSE crude oil. At that time also we had suggested to buy MCX zinc. So at that time it was trading at around 374, 373 kind of levels. Now it's at 376, 70 kind of levels. But it made a high of around 379 yesterday, and it's likely to go more on the upside. अगर हम लोग इसका एक चार्ट देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं, तो ये पैटर्न के हिसाब से 388, 387 kind of levels it can touch in coming days. The stop loss could be at around 372 from here. So 372 के नीचे आप stop loss रख के एक जिंक में ट्रेड ले सकते हो. On the upside you can expect the targets of 382 and 387 on the higher side. So ये एक बेस मेटल्स के लिए ट्रेड रहेगा. इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, यू शुड नॉट मिस दिस ट्रेड ऑन द बेस मेटल्स फ्रंट, बिकॉज इन द बेस मेटल्स पैक जिंक एंड एल्यूमिनियम आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. सो आप जिंक के साथ जा सकते हो. यू कैन गो विद दिस ट्रेड if you are a positional trader, of course, as we have gathered here only for the expiry. So on the expiry front, as of now, there is only option selling trade, but we will try to go for the option buying trade also if we get an opportunity. Let's wait for some time. And on the gold front, if we speak, gold is taking multiple supports near 4,000 level. So 4,000 is a psychological level as of now. So it has like I would say, let's go to the chart. So अगर आप देख सकते हो ये चार्ट में, ये 1 घंटे का चार्ट है, बहुत बार मल्टीपल सपोर्ट लेके 4,000 से घूम रहा है गोल्ड. सो अगर 4,000 लेवल ब्रेक होता है, जो रिसेंट जो स्विंग है वो अगर ब्रेक होता है 4,015 का वगैरह, तो देन वी माइट सी अ गुड फॉल इन गोल्ड प्राइसेस. बट एज वी स्पीक, अभी देखो रिसेंट अगर हमने सपोर्ट देखा तो यहीं से फिर से घूम रहा है. सो ये 4,015 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है. सो वी अगेन माइट सी कि ये फिर से एक बार रिवर्स होके टुवर्ड्स 4,070, 4,080 काइंड ऑफ लेवल से एक बार टच कर सकता है. एंड ऑन द हायर साइड ऑल्सो 4,100 के लेवल जो है, that's it's not able to cross 4,100 on the closing basis. So 4,100, 4,120 would be the key resistance. So it's kind of a range play for gold as of now. जब तक 4,000 के नीचे नहीं जा रहा है, 4,120 के ऊपर नहीं जा रहा है, it's kind of a range play. But if it breaks below 4,000 on closing basis, then it's a good opportunity to go short. Then उसके बाद हमें 3960, 3900 kind of levels दिख सकते हैं. So I'm expecting a fall of more than $100 if it breaks below 4,000 on closing basis. और अगर 4120 के ऊपर जाके क्लोज होता है, then there would be buying opportunity for another $100 or $150 on the upside. So 4,120 के ऊपर अगर जाता है, then you can go for buying in gold for another $100 or $150 on the upside. So this was for gold. Coming back to crude oil chart, crude oil में अभी भी कुछ मूवमेंट तो है नहीं. Let's look at the premiums. 7,900 or 7,500 now at 12 only. So premium अभी तक वहीं पे है. But as we approach towards the expiry, 7 बजेंगे, जैसे 7-8 बजते आएंगे, and अगर प्राइजेस यहीं पे रहेंगे, so this premium is likely to decay towards zero. So this will be the best opportunity to take a short triangle in crude oil today. So 7,900 also you can go with, and 7,800 also you can go with, जो 14 रुपया चल रहा है, and 7,500 is trading at 8 rupees. As we speak, crude oil में तो कुछ movement है नहीं, but we have already suggested few trades. अब gold में एक reversal trade बन सकता है if it's not breaking below 4,000. But of course, there's a data at 6 o'clock, unemployment claims data at 6 o'clock. So I would recommend you to not trade now in gold. Wait for some time and wait for the data to be released, and after that you can take a position in gold. So अगर 4,000 का सपोर्ट लेके घूम रहा है, then after 6 o'clock you can go long in gold for the targets of 4,080 and 4,100. And if it breaks 4,120, then the rally is likely to continue. But unfortunately, if it breaks below 4,000 after the 6 o'clock data, then I would expect you to go short
and I'm expecting a fall of more than $100 in gold. 4037 चल रहा है अभी. अभी जस्ट हमने चार्ट देखा था कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, वहीं से रिवर्स हो रहा है वो, बिकॉज इट्स अ मल्टीपल सपोर्ट जोन एंड 4000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल. सो 4039, 405, 40 ऑलमोस्ट आ गया एंड डेटा इज गोइंग टू बी रिलीज 6 o'clock. स्टिल द मूवमेंट अगर देख रहे हैं हम लोग की, मूवमेंट 1 घंटा पहले ही आ रहा है इसमें. ऑन द on the I would say on the this base metals pack, zinc is looking very promising. So on daily and weekly chart, 388 kind of levels I'm expecting. So if you are a positional trader at this time, not silver, not gold, but zinc is the best bet. You can take, it can go up to 388 or 390 kind of levels. इसमें stop loss आपका 372 का ही रहेगा. 372 के नीचे अगर जाता है, you have to square off the positions. Of course you can go with the mini lots also in zinc. Zinc का जो mega lot है which is of 5000 and mini lot is of 1000. So you can go with multiple mini lots or mega lots as per your risk appetite. Speaking of natural gas भी अभी recently एक fall आया था. Of course there's a natural gas options expiry in the next week. Of course we'll be covering the expiry also. But अगर natural gas का अभी last 3 या 4 दिन से हम लोग अगर चार्ट देखते हैं, so it's forming a doji kind of candles. Doji candles are always indecisive. After a big fall we have seen indecisive candles. So it might be a sign of a reversal. यहाँ से एक बार support लेके reverse भी हो सकते हैं. But आज एनजी का इन्वेंट्री भी है एट 8 o'clock. सो 8 बजे के इन्वेंट्री के बाद वी माइट सी अ ट्रिगर. सो अगर ये रिसेंट जो लो है विच इज 272, अगर उसके नीचे एनजी प्राइसेस जाते हैं, देन वी माइट सी अ फॉल टुवर्ड्स 250 और 245 काइंड ऑफ लेवल्स. सो इन द कमिंग सेशंस, not today, in the coming sessions. And if it manages to cross about 290, 295 kind of levels after the inventory, then we might see NG reclaiming the 310 kind of levels in the coming sessions. So it's all about the inventory today for NG. And for crude oil, we don't have any data. Yesterday was the inventory, so inventory is already out for this week. But crude oil is nowadays running on the US Iran news only. So we'll have to watch US Iran news, what comes out of it, and according to that we have to play the expiry. But speaking of levels, I have already explained the levels. 7700 के ऊपर ही बाय करना है. 7700 का कॉल which is trading at around 78 now, 7700 का कॉल, एंड 7600 के नीचे ही सेल बाय करना है 7600 का पुट. सो 7600 का पुट इज ट्रेडिंग एट 28-29 now. सो जब तक ये 7700 के ऊपर जाएगा, दिस कॉल वुड बी 7700 का कॉल इज ट्रेडिंग एट अराउंड 36, सॉरी. सो 7700 का कॉल वुड बी ट्रेडिंग एट अराउंड 50-55 अगर 7700 के ऊपर जाता है तो. सो दैट वुड बी योर बाय लेवल, एंड उसमें आप 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो. एज ये 7700 के ऊपर जाता है, आप 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के 7700 का कॉल बाय कर सकते हो. बट नाउ अभी ये लेवल पे बाय करना वुड नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज इसमें अभी मोमेंटम ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई. ओके, एज वी स्पीक 7700 के ऊपर आ चुका है क्रूड. समथिंग इज देयर, समथिंग इज कमिंग आउट. एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एक टिक मारा है. लेट्स सी इफ इट सस्टेन्स. अगर ये सस्टेन होता है मूव, देन वी विल गो फॉर द कॉल. जैसे मैंने बताया 700 तक आएगा तो ये 55 तक जाएगा. तो 700 तक आने के बाद ये 55 के ऊपर चला गया कॉल. लेट्स सी इफ इट सस्टेन्स. अगर ये सस्टेन होता है, देन ओनली वी विल टेक द ट्रेड. ये जस्ट एक स्पाइक मारा है अभी इसने. ओवरऑल, as I said, the fundamentals or whatever the news is coming out is supportive for the crude. So that's why that might be the reason उसमें कुछ तो आया है. Let's see. Okay, so I would suggest you all to buy this call. 7700 call I would suggest you to buy. 67 चल रहा है, and इसका स्टॉप लॉस रहेगा 37 का. 30 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा इसमें. 67 चल रहा है, 30 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा, and you can expect crude to go above 7750, 7800 kind of levels in next few hours. But stop loss is must. 37 का stop loss रखना है. If the trade fails, we have to go out of the trade. We have to square off the position. 67 में हम लोगों ने recommend किया है. Now it's at 62. Still you can buy. Keep the stop loss of 37. Let's see for next 5 minutes how it's performing.
On this on the WTI crude, it's trading at 80.30, so I'm expecting it will go towards 81, 81.50 kind of levels if it sustains above 80.20 or kind of levels. 7690. See how the expiry plays a key role, because थोड़ा ही नीचे आने के बाद भी 700 का कॉल जो है वो ऑलमोस्ट 10 रुपया नीचे आ गया है. सो दिस इज हाउ एक्सपायरी गामा मूव्स प्ले अ बिग रोल. अभी थोड़ा अगर सस्टेन हो गया यहीं पे तो ये और थोड़ा डीके हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल द मोमेंटम इज ऑन द हायर साइड, सो दैट्स व्हाई वी आर एंटर्ड. इसमें स्टॉप लॉस रखना है 37 का, and we have to wait till, I would say, another two candles, two 15 minutes candles. Of course, we won't be there live, but I have already given you the stop loss. 37 का premium का stop loss रखना है. We have bought it at 66, 67. A few of you might have bought at 61, 62 also. So that it's 64 now. 7703, 7706. If this candle closes above this trend line, it's likely to go 100 points on the upside. एक 100 पॉइंट का मूव तो आने के चांसेस है मिनिमम, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो. लेट्स सी. गोल्ड एक थोड़ा नीचे आया है, एक स्पाइक मार के नीचे आया गोल्ड. सो सपोर्ट तो ले रहा है 4000 का, बट इट्स, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स आफ्टर द डेटा. डेटा के बाद क्या करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. Crude is at 7695, 7698. Option is at 60 rupees. Let's see. अगर ये 5 मिनट में इसके ऊपर ही क्लोज होता है, then this might be a good winning trade for us on this expiry. 7693. बाकी कोई काउंटर में मूवमेंट आया है क्या देखते हैं. जिंक इज ट्रेडिंग एट 377. थोड़ा बहुत ऊपर आया है, ज़्यादा नहीं, but still zinc is looking very promising. You can go with the zinc for the positional trade, not for the intraday one. You can go for the positional. Base metals are very good to trade for the positional purpose. 7693 crude now. We need the future to sustain above 7700, then the trade could go in our favor. Otherwise we have the stop loss in place of 37 on the premium. 7692, 7690, 93, 96. 700 का कॉल देखिए. जहाँ पे फ्यूचर आने के बाद हमने जो कॉल बाय बोला था वो 66, 67 चल रहा था, एंड नाउ फ्यूचर इज एट 7, द सेम पॉइंट, एज गुड एज द सेम पॉइंट, बट स्टिल जो ऑप्शन प्राइस है दैट हैज डीकेड बाय 10 रुपीज. सो 10 रुपये नीचे आ चुका है बिकॉज इट वॉज अ सडन स्पाइक, बट स्टिल प्राइस तो सस्टेन हो रहा है. सो वी माइट सी अनदर स्पाइक टुवर्ड्स 7730, 7740 काइंड ऑफ लेवल्स. जो हमने सजेस्ट किए थे जो ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स, दोज आर आल्सो एट द सेम काइंड ऑफ लेवल्स. 7701, 700 के ऊपर तो सस्टेन तो कर रहा है ये धीरे धीरे. 7692. दिस कैंडल क्लोजिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस है, बट the momentum has gone on the upside, so it's better to be long than to be short. RSI is also trying to get into the positive zone, so उसके बाद एक momentum पिकअप हो सकता है. 700 का कॉल is trading at 55 now. We entered at 66, 67. So this was a spike move that we saw. 7697, 7699. Still 4 minutes for the candle closing. 770103,
61 रुपीज़ का प्रीमियम आ चुका है. 7705, 62 प्रीमियम, 63, 7707, 61 का प्रीमियम है. 66, 67 पे जिसने बाय किया है, 62 पे भी कुछ लोगों ने बाय किया होगा, बिकॉज it was trading at 62 also once it made a spike of 67. Okay, 7702. Okay, so more or less it's sustaining at the higher levels. We won't be there throughout the expiry in the evening, but we have already discussed about the stop losses. We have already discussed about the targets. Okay, speaking of the target, if crude crosses above 7750 in next 15 or 15 minutes or 30 minutes or so, so I would recommend you to all to book your profits. So this option is likely to go towards 80 or 90 kind of levels. So 90 के ऊपर अगर प्रीमियम जाता है, you can book your profits. 90 95 के ऊपर जाता है तो 60 का प्रीमियम चल रहा है अभी भी, बट जैसे ही एक स्पाइक आएगा ना इसमें, थोड़ा तेजी से ये प्रीमियम बढ़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो. ऑफ कोर्स वी वोंट बी देयर थ्रू आउट द एक्सपायरी, बट द स्टॉप लॉस विल बी 37 ओनली. 37 का स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम पे. So that's it from my side for the day, for the crude oil MCX crude oil expiry. In the next week we have natural gas, MCX natural gas expiry, options expiry. So we will try to cover as many trades on natural gas also. So thank you all for joining. Very happy trading session to you all. I hope this trade turns profitable for you all. But I would also recommend you all to keep the stop losses in place. 37 का stop loss रहेगा इसमें, वो आपको मिस नहीं करना है. 37 अगर ब्रेक होता है प्रीमियम पे, आपको एग्जिट करना है, and not to go all in on any trade. Of course, to follow the risk management rules. Thank you all for joining. I have a very happy trading session to you all. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.